Now about the iodine deficiency, goiter is the one of the deficiency disease which occurs in various parts of our country. Iodine is needed for the synthesis of the hormone called thyroxine, which is produced by the thyroid gland. ठीक है, which is produced by the thyroid gland. A person with goiter shows swelling in the neck region like this, swelling in the neck region. Iodine deficiency during fetal stage. Fetal means when the baby is not born, inside womb, woman's womb means mother's womb, जब वो पैदा नहीं हुआ है, this is called fetus. Fetal stage may lead to mental retardation. What do you mean by mental retardation? ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होना, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन. ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होना. फिजिकल रिटार्डेशन मीन्स शरीर ठीक से नहीं बढ़ना, हाइट नहीं बढ़ना. व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिटार्डेशन? दिमाग का नहीं बढ़ना. एंड रिटार्डेशन इन ग्रोथ इन लेटर लाइफ, ग्रोथ नहीं होना. इट इज़ प्रिवेलेंट इन द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज. इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट among the people of the coastal areas. Not prevalent. Prevalent means not found. Why? Because they get the iodine from the seafood. They get iodine from the seafood. क्योंकि iodine जो होता है ना, seafood में बहुत सारा iodine होता है. Deficiency of iodine is common in mountainous region. iodine का कमी mountain region में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ where the soil and water are poor in iodine. Soil and water are poor in iodine. Iodine is less present in mountain region. One of the well-tested approach to control iodine deficiency disease is the use of iodized salt by the affected population. Means जब सबको पहले इसके बारे में पता नहीं था, आयोडीन के बारे में, इस तरह का डिजीज़ गोइटर. So the study took place, study हुआ, and we found out, the scientists they found out that okay, by eating iodine, if mountain, those who are पहाड़ी इलाकों में, जो mountain region, the person who are staying in mountain region, there the soil and water is deficient in iodine. So if a person takes iodized salt, then the deficiency can be cured. Okay, the coastal region means समुद्र किनारे, तो they are eating the seafood, and seafood has plenty of iodine, so they are not suffering from goiter disease. But the person who is living in mountain region, they are suffering. So by eating iodized salt means salt में iodine को मिला दिया जाता है. Okay, salt जो होता है normal salt, in that iodine is put so that it becomes iodized salt. By taking that, one can not suffer from deficiency disease. So iodine is released. Iodine is very much important for the proper functioning of the thyroid gland, because thyroid gland is making thyroxine hormone. Okay, hormone एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी में बनता है, सिंथेसाइज होता है. सो अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेंगे, then thyroxine will not be formed. If thyroxine will not be formed, a person will have swelling in the neck region. Not only this swelling, okay, swelling ही तो हुआ, no, the body parts will not function properly. ये बड़ा बात है, ठीक है. रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, अगर छोटे बच्चों में आयोडीन डिफिशियंसी होता है तो रिटार्ड मतलब लेसर ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ ऑल्सो लेस, फिजिकल ग्रोथ ऑल्सो लेस. ओके, एंड डाइजेशन बाद में अगर बड़ों को होता है इस तरह का, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, खून की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. आयोडीन डिफिशियंसी इज देयर इफ थायराइड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. नाउअडेज इट इज़ मोर कॉमन थायराइड ग्लैंड, उसको थायराइड है, ये वाला बात हम लोग बहुत सुनते हैं, थायराइड. सो बिकॉज दिस इज नाउअडेज ड्यू टू लेसर फिजिकल वर्क, और भी थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन बनाना कम कर दिया है. सो इट्स एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट and make our thyroid gland in proper condition so that thyroxine will be released and we not suffer from goiter disease. Okay, this was about the iodine deficiency. I hope you have understood and you are eating proper amount of food properly, you are eating balanced diet. ठीक है, next video I will be telling balanced diet. Thank you.